sacked Bengal minister is India's #1 demand tonight. The TMC minister is not yet sacked by Mamata Banerjee. After the national anger over the insult on president, these are protests erupting from Bengal to Odisha. FIR now is filed in Odisha as well as body shaming and sexist slur becomes India's #1 headline. The NCW takes note of the Republic newsbreak, taking suo motu cognizance and also issuing a notice. Republic Bangla exposing the TMC minister broken 12 hours ago is India's #1 headline. The NCP MLA Jitendra Awad is arrested, sent to judicial custody and then he's released after being granted bail. But what really are they celebrating? And breaking news has just coming in. It's a big controversy over the NCP leader Jitendra Awad's arrest and release. The DCP who oversaw the arrest of Jitendra Awad now has been transferred. This development coming after he was granted bail and even released earlier today. So a big controversy over the cop who actually went ahead and made this release. This is the DCP who actually oversaw the arrest of Jitendra Awad, the man from the NCP, the hooligan who was captured on cameras trying to push away and manhandle people in a theatre in Thane, now has been transferred, is what we are given to understand. And do remember earlier today, Jitendra Awad was also produced in a local court and he now already has been granted bail. Alisha has more details for us on that story. You know, Alisha, at times you don't know what to say. I want to know from you, what more do we know about the transfer? Has there been any, official release that has been put out? What is the reason for this transfer? Well, yes, we know that there was a DCP transfer, but moreover, it's very important to point it out at this point of time because it's a DCP, Vinay Kumar Rathod, who was a DCP Zone 5, who oversaw the arrest of NCP leader Jitendra Awad in a case that has been registered with the Vartak Nagar police station, but now has been transferred out and now will be charged as a DCP traffic in Thane city. So this is the development that has been coming in right after Jitendra Awad, who has been released on bail with the surety bond of 15,000 rupees by the magistrate court in Thane. And right after that, we have been seeing there is a transferred order that has come across and an official order that has come across of Vinay Kumar Rathod, who was a DCP Zone 5 Thane city. And as I mentioned, who oversaw the arrest of Jitendra Awad and now been transferred to as a DCP traffic Thane city. Now, Alisha, we can be given to understand, and this is exactly what the state will say. They will say all this is regular because this is a part of a routine transfer, but people you see through this plot, people see through this very, very clearly. Have you been able to speak to your sources in the police department there? What do they say? Well, as of now, there is no official statement that has been coming up from the police department. And yes, as you mentioned that people will will say the same. This is a regular transfer which has come across. But why exactly the same day specifically when it comes to the arrest and the release of Jitendra Awad? Because Vinay Kumar Rathod was itself present when Jitendra Awad was brought in to the police station and when he was detained and officially arrested. We even saw Vinay Kumar Rathod, who was there present at the police station. But
but now today there is a transfer letter that has been come across, and now he's been transferred out, and he will be now the DCP Traffic Thane City. So this is something giving a clear link, because he oversaw the arrest of Jitendra Awad, and now there is a transfer list that has coming out clearly. He's been taken out from the same zone, that is from the zone 5 of the Thane City. But now he will overlook to the traffic, where he's been asked to take a charge of a DCP Traffic Thane City. Okay, I just quickly want to recap what we know about the story so far, Alisha. He thrashes a citizen in full public glare. All this is caught on camera. He's arrested only and only after the relentless campaign by Republic. The man is arrested. He's produced before a local court. He's sent to judicial custody. He takes a bail. And in the middle of all this, the cop who oversaw this entire procedure of the arrest is today transferred. So I let our viewers decide whether this is routine or there is a sinister ploy behind that. Alisha, more reactions coming in. We'll listen into that now. And now let's shift our focus to the other top story that we are tracking. A story again broken by Republic last evening. A story now that has become the big national talking point. But what has Mamata Banerjee done? Of a minister, a sitting minister, very, very close to Mamata Banerjee, who heaps the choicest of insult, uses a crass language and extremely misogynist and sexist comments against the President of India. Only a condemnation saying we distance ourselves from this comment, but absolutely no action. Now, it's not just the BJP, but viewers have also begun to speak up, and they say this man needs to go. I want to cut across to Odisha right now. This is from our partner network OTV that Chandan is joining us live right now, and he's been speaking to a lot of people there, a lot of protesters there. This after an FIR also has been filed in the state of Odisha. चंदन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय कहती हैं कि वो दलित्स के साथ हैं, ट्राइबल्स के साथ हैं, उनके हितों के लिए बात करती हैं, महिलाओं के हितों की बात करती हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है चंदन, तो खामोश हो जाती है। देखो, ये संविधान विरोधी बात है और संविधान की सर्वोच्च जो हमारे देश की प्रथम नागरिक जो है उसके खिलाफ जो बात बोला गया है, और अखिल गिरी जो टीएमसी का मिनिस्टर है, ये बात बोलने के बाद देश भर में आंदोलन, देश भर में ये आज टीएमसी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। हम भुवनेश्वर में है, हमारे साथ आम आदमी ये महिलाएं खड़े हैं जो कि अभी यहाँ की जो महिला थाना है यहाँ पे एक एफआईआर भी दर्ज किए हैं, और यहाँ पे डिमांड है और मांग है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और मंत्री को बहिष्कार किया जाए, और टीएमसी का जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो ये मंतव्य दिया गया है मिनिस्टर की तरफ से, खुद ममता बनर्जी ने सर्वसाधारण में लोगों के बीच में आकर ये क्षमा प्रार्थना करे। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्मृति पटनायक है। क्या बोलना चाहोगे? ये जैसे बात बोला गया है देश की हमारे सर्वोच्च नागरिक के तरफ ये अशालीन मंतव्य, आप कैसे देखते हैं और एफआईआर में क्या लिखा है? देखिए, ये सबसे दर्दनाक और शर्मनाक चीज़ है। ये हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, महामहिम हम बोलते हैं जिनको,
ये हमारी गणतंत्र की व्यवस्था के तौर से किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई चुन लिया और वो जाके वहाँ पर पहुँच गए। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ममता बनर्जी ने खुद अपने लफ्ज़ में नहीं बोले हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बोलते हुए उनके लफ्ज़ दूसरों की स्वर में आते हुए नज़र आया। क्योंकि जो अखिल गिरी जी हैं वो उनके दल के ही नेता हैं, और जो जिस जगह पे कर रहे हैं वो सार्वजनिक जगह पे बैठ के एक आम सभा में कह रहे हैं, ये बहुत लज्जाजनक स्थिति है हमारे लिए। हम सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमारे उड़ीसा के हैं, महामहिम राष्ट्रपति हमारे उड़ीसा के हैं, हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। और हमारे बगल वाले जो पड़ोसी राज्य है उनको भी इस चीज़ को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो साल में देखिए ये मिट्टी जगन्नाथ का मिट्टी है, इस मिट्टी में हम मानते हैं कि ये सुभद्रा बहन की मिट्टी है, और जगन्नाथ खुद किस रंग के होते हैं ये अगर बंगाल वाले आज तक नहीं जान पाए, तो ये ममता बनर्जी को तो डूब मरने वाली बात हुई है। अखिल गिरी जी को डूब मरने वाली बात हुई है। और एक बात हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हम देखो हमारे स्वाधीनता आंदोलन में पहले हम काले और गोरे ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव को छोड़ दे और ये भेदभाव को जो लाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अभी तक ये कार्रवाई नहीं दिखा गया है। वही मैं बोली आपको ना, ये ममता बनर्जी की जो अंदरूनी बात है, जो अपने अंदर में छुपी हुई सारी बातें वो खुद भूल जाते हैं। शायद ममता बनर्जी एक पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पार्टी के वो खुद महिला के हिसाब से वो प्रेसिडेंट है। और किसके बारे में बोला जाता है? एक महिला राष्ट्रपति के बारे में। कौन है वो दलित संप्रदाय से आते हुए, जिनको हमारे राष्ट्र के जो सबसे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी चुन के वहाँ बैठाए हैं, वो जिस संप्रदाय से आते हैं, एसटी के संप्रदाय से, उनको अगर देखा जाए तो हर जगह पे अखिल गिरी जी को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, उनके ऊपर लगाव लगाना चाहिए। ये महिला के विरोधी हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एसटी के विरोधी हैं, इनके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। ये संविधान को असम्मान किए हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि वो खुद जेल के विभाग के मंत्री हैं, वो खुद जानते होंगे, अगर उनके पास में कानून के किताब होंगे वो खुद पढ़ना चाहिए कि उनके लफ्ज़ के हिसाब से उनके ऊपर में क्या दफ़ा लगनी चाहिए। निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट देते हुए अभी 24 घंटा बीत गए। 24 घंटा के बाद भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक अखिल गिरी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। क्या बोलना होगे कि एक बार हम जैसे देखते हैं कि ये कार्रवाई नहीं हुआ तो ममता बनर्जी भी ये सपोर्ट करते हैं ये स्टेटमेंट को? बिल्कुल, तो पता चल रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं लिया, तो इसीलिए तो यही पता चलता है कि वो सपोर्ट करते हैं इस बात को। जैसे कि प्रथम नागरिक है, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एंड जितना भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट हो सकता है उन्होंने दिया अखिल गिरी जी ने, पर अभी तक उन्होंने ना माफ़ी मांगी, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। तो इससे तो पता ही चल रहा है कि ममता बनर्जी उन्हीं के ही साथ है। जैसे दीदी ने अभी बताया कि हम लोग का देश का संविधान ये बताते ही है कि हम लोग का कास्ट, क्रीड और कलर, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। तो इसी के चलते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं, या फिर सोचने के लिए मजबूर किया गया है हमको कि वो सपोर्ट करते हैं इस बात को। निश्चित रूप से ममता बनर्जी ये बात को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए अखिल गिरी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। आप लोगों ने महिला थाना में भी एफआईआर दिए है, तो एफआईआर किसके खिलाफ होगा? अखिल गिरी के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ? वो हमारी देश के राष्ट्रपति हैं और हम उन्हें सम्मान से महामहिम संबोधन भी करते हैं। तो जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री रहे, तो मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लज्जा अनुभव हो रही है महिला के होने की वजह से, और एक देश के सचेतन नागरिक होने की वजह से मैं ये कहूँगी, वो तो पागल नहीं हो सकते, उनके दिमाग तो खराब नहीं है। अगर वो ऐसे आपत्तिजनक मंतव्य हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ दे सकते हैं, तो समझिए एक चिंता करने के विषय है उनका मानसिक स्थिति क्या है। और एक बात, अगर महिला होने के नाते ममता बनर्जी ने आज तक 24 घंटे बीतते हुए भी कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो मैं ये आपके माध्यम से ममता बनर्जी से अपील करना चाहूँगी कि अगर आप महिला हैं और दूसरी महिला को सम्मान करना जानते हैं, तो कृपया
आपके वो जो आपत्तिजनक मंतव्य दिए हैं, जो मंत्री हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, उन्हें तुरंत बहिष्कार करके आप राष्ट्रपति को यथोचित सम्मान प्रदर्शन कीजिए। मैडम क्या बोलना चाहोगे कि ऐसे गोरे और काले भेदभाव अभी भी दिमाग में है? टीएमसी मिनिस्टर अखिल गिरी के स्टेटमेंट से पता चलता है। देखिए, ये तो बहुत लज्जाजनक बात है। वो जो अखिल गिरी हैं, वो जैसे बोल रहे हैं कि काला रंग पे वो बोले हैं, वैसे माना जाए तो वो लोग मतलब बंगाल के सभी मतलब दर्शक आते हैं, जगन्नाथ दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ तो काले रंग है, तो इस काले रंग को वो खास करके बोले हुए हैं, लेकिन ये बहुत निंदनीय है, जिसको हम लोग कभी सहन नहीं कर सकते हैं। देश भर में ये बात को लेकर जैसे ममता बनर्जी को विरोध किया जा रहा है, अखिल गिरी को विरोध किया जा रहा है। भुवनेश्वर में हम देखे गए कि आम आदमी भी ये बात को सभी स्तर से निंदा कर रहे हैं। सभी स्तर से ये बात को लेकर आज ऐसे दिखा गया है कि जैसे राष्ट्रपति उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। राष्ट्रपति उड़ीसा के लोगों ने राष्ट्रपति को लेकर गर्व महसूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देश में पहले महिला जो है द्रौपदी मुर्मू जी है, महिला के खिलाफ ये अशालीन मंतव्य See Nalini there, one of the assassins of the former Prime Minister of the country, Rajiv Gandhi. She remembers walking out free. She is walking out free along with the other assassins following a Supreme Court order. She is speaking right now. And remember, even at a point where again and again we reiterate here at Republic, we respect the courts, the highest courts in the country and the judgment. So it's important also to look at a holistic picture and take forward the entire discourse of where. Thank you so much. All right, that is the image coming in from outside the Vellore jail. Nalini is walking out free, not just that. She's speaking to the cameras there. We'll also cut across to Varshini, who's been tracking that story and the many sharp reactions that this story has evoked. Do not forget that the Supreme Court has announced their premature release. Let's see if we can listen into what she said. மறக்காம இருந்த தமிழ் உள்ளங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்காக உதவி செஞ்ச எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மத்திய அரசு மாநில அரசு இருவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விடுதலை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கா? ஆனா இந்த கணவர் வந்து வீட்டுக்கு வர முடியாத ஒரு சூழல், அதுக்கு இந்த மகிழ்ச்சியோட ஏற்க முடியுமா? இல்ல இந்த விடுதலை அப்படிங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கா, இல்ல இன்னும் ஒரு வருத்தத்தோட தான் என்னமோ இருக்கீங்களா? உங்க கணவர் இப்போ உங்க கூட இல்ல, அவர் வேற இடத்துல இருக்காரு.
நாளைக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீட் சென்னையில் வச்சுருக்காங்கங்க. நம்ம எல்லாரும் சந்திப்போம் திரும்ப, சரிங்களா? அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து லாயர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க டெல்லியிலேருந்து. அவங்க எல்லாரும் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்க விரும்புகிறாங்க. அவங்க கூட எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி. தமிழ் மக்கள் எங்களை 32 வருஷம் மறக்காம எங்க பின்னாடி வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க பாருங்க. அதை வந்து எப்படி வார்த்தைகளால சொல்றதுன்னு தெரியல. மிக்க நன்றி. இந்த அதாவது சிறை வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலுமா விலகி ஒரு இந்த பொது வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கீங்க, ஒரு சமூகத்துக்குள்ள வந்திருக்கீங்க. என்ன மாற்றம் இருக்கு உங்களுக்குள்ள? நான் பொது வாழ்க்கைக்கு வர விரும்பல. நான் வந்து ஒரு குடும்ப தலைவியா தான் இருக்க போறேன். என்னோட குடும்பம், என்னோட குழந்தை, என்னோட கணவர், இவ்வளவுதான் என்னோட வாழ்க்கை. உங்க மகள் கிட்ட பேசுனீங்களா? உங்க மகள் என்ன சொல்லிருக்காங்க? இங்க வராங்களா இல்ல நீங்க அங்க போறீங்களா? நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் அங்க வந்துருங்கப்பா, நம்ம பேசுவோம். சென்னைக்கு கண்டிப்பா வாங்க எல்லாரும். எல்லாரோடையும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ so much. Alright, so you heard that reaction that has just come in from Nalini. In fact, we'll get Varshini to translate that for you, but a little bit that we did understood is that she hails this justice. She welcomes what the Supreme Court has said. Do remember again, as I said, a story that has sharply divided opinion. It's a huge debate about whether these terrorists should be allowed to be free. Now remember, they are already free now. All of them are free today because of the Supreme Court order that allowed the premature release of these assassins. Varshini, I'm told you're there with us. What exactly did Nalini say? Well, Nalini initially started off by thanking the Tamil people, the state of Tamil Nadu, for supporting her and all the other convicts for the past 32 years. She says that only because that the belief that the people had in them, today they are able to walk free in the society. She also spoke about how she will be coming to Chennai tomorrow and try and meet with the government of Tamil Nadu. She said that both the AIADMK government and the DMK government had helped her and the other convicts to come till this day. So she'll be coming to Chennai to try and meet the Chief Minister and thank him, and also with all the Supreme Court judges who had argued for Nalini and the other convicts. She'll be meeting everybody, and she says that she's very upset about not being able to reunite with her husband, and she will also talk detailed about how she's going to carry forward with her life. But she says she will never be into the social life ever again. She will definitely want to have a more private and a family life that she's missed for 32 years. So she says that she's going to live only for her family hereafter. But you know, Varshini, I think that's where it becomes problematic. I mean, I don't know whether these people or these terrorists are looking for a future in politics. The very fact that she's stepping out today to say she's going to be headed to Chennai now to meet with the Chief Minister, and clearly, there is a lot of politics being played on that story. For the moment, I'm afraid, Varshini, we'll have to leave it there, but we'll track that story. Thank you. And from that big story, we are going back to what happened in West Bengal. The lack of action by Mamata Banerjee against her own men, who's using crass, despicable, extremely misogynist language against the president of the country. And action? There is absolutely no action. Now, I want to, in fact, get into this entire conversation. Kusum Tete, who's a BJP MLA who filed this FIR against the minister in question, Akhil Giri. She's joining us from Odisha right now. कुसुम जी नमस्ते, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी नमस्ते नमस्ते, सुन रहे जी। अब कुसुम जी मुझे ये बताइए कि 24 घंटे हो चुके हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने अभी तक इस नेता को अपनी पार्टी से, मंत्री पद से नहीं हटाया है। जी 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 बहुत दुख की बात है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और वो खुद एक बड़ा पद में है, सीएम है, तो उस धर्म में देखने से एक महामहिम भारत वर्ष के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर में इस टाइप का काले और गोरे का जो आक्षेप किया गया है, उसको निंदा किया गया है। इस टाइप का आदिवासी महिलाएं के ऊपर इस प्रकार वेस्ट बंगाल के जनप्रति लोग देखते हैं क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ
तो ममता बनर्जी को मेरा अनुरोध है कि इस टाइप का पागल जनप्रतिनिधि काहे रखे हैं, बार बार इस टाइप का आक्षेप करते हैं, बार बार इस टाइप का एक हमारे महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को बोल रहे हैं, उस टाइम बोले थे पत्नी बोल के। तो ये कौन सा आधार में ये इन लोग को पावर मिला है जो ऐसे बोलते हैं, जो कि आइन में है कि कोई एक ऐसा बात नहीं बोल सकते हैं महामहिम के लिए। और ये जैसे कि गणतंत्र है, ये गणतंत्र के हिसाब से कोई किसी का अधिकार नहीं बनता है। तो इसमें मैं खुद एक एसटी लेडी एमएलए के हिसाब से मैं केस दर्ज की हूँ थाने में, मेरे टाउन थाने में, और इसका जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और इसका हम देखने में वेस्ट बंगाल का लाख लाख आदमी आते हैं हमारे ओडिशा का पूरी धाम में, उसमें है आदिवासी का एक दारू देवता बोलते हैं। दारू बोलने से हम लोग पेड़ को बोलते हैं, तो वही दारू का पेड़ का एक भगवान है जो कि जगन्नाथ ठाकुर, काले ठाकुर बोलते हैं। तो उस हिसाब में उनके पास आते हैं, सिर झुकाते हैं, उनका दुख सुख बता के जाते हैं। तो वो अगर उस टाइप का सोचते हैं, ये और भी भगवान हम लोग का है, कृष्ण कले हैं, राम जी कले हैं, तो ऐसे बहुत देवी हैं हमारे काले रंग के। तो ये हम भाग्यशाली सोचते हैं कि भगवान जी तो खुद कले हैं, तो हमारे पब्लिक मनुष्य जीवन में एक काले रंग का आना एक खुश नसीब होना चाहिए, काहे कि हम भगवान का रूप मिला है। तो इस टाइप हम सोचते हैं। और हम आदिवासी लोग हम धूप में, पानी में, गर्मी ठंड जो भी समय आता है, हम लोग खेती बाड़ी करके हम लोग काम करते हैं और अपना जीवन हम आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम लोग आदिवासी लोग ऐसी में रहते हैं और हम लोग का जीवन यापन होता है, ये नहीं है। हम लोग सरल आदमी हैं। कुसुम जी, उस हिसाब जी 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 आप आहत हैं, ये बहुत साफ है। और आप ही की तरह मुझे लगता है कि इस समय इस पूरे कंट्री में हर किसी को आहत होना चाहिए, क्योंकि नेताओं के लिए जैसे कहते हैं ना, ये फैशनेबल हो गया, ये फैशन में है कि आप खास तौर पर महिलाओं को इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करें, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करें। पहली बार नहीं है कि किसी नेता ने इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, लेकिन शायद पहली बार प्रेसिडेंट के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब आप क्योंकि ओडिशा से बीजेपी की एमएलए है, मुझे ये बताइए, वहां एफआईआर तो फाइल हो गई है, लेकिन आगे अब क्या होगा? जब प्रेसिडेंट का चुनाव था, मुझे याद है कि जो आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत साफ ये कहा था कि हम संथल कम्युनिटी से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं। आज क्या आपसे उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी? राखी पहनाया हुआ बहन बनाए हैं। हाँ। तो क्या कहा, आपकी बात हुई है क्या उनसे? नहीं, हमारे से तो बात नहीं हुआ है, लेकिन उन लोग तो सब कुछ देख रहे हैं। अगर उन लोग एक खुद उसी टाइम बहन बना के बहन का दर्ज दिए थे, तो अभी क्या उन लोग को बहन के लिए एक शब्द भी बोलना नहीं है क्या? उनका बहन को इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, इतना काले गोरे का भेदभाव रख रहे हैं, ये क्या सही है? तो हमारे ओडिशा में तो ऐसे ही हमारे ओडिशा सरकार हमारे माँ महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनको तो दिखाई नहीं देता है। और हम तो ओडिशा एक नंबर हो चुके हैं माँ महिलाओं का, जो जैसे मर्डर से लेके बलात्कार से लेके इस टाइप का सम्मान हम रोज झेलते हैं। तो हमारे ओडिशा सरकार तो देखता ही नहीं है। ठीक है कुसुम जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर फाइल की है। देखना ये होगा कि कार्रवाई कहां होगी, ममता बनर्जी कब तक खामोश रहेंगी। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। कांग्रेस
यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी। आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना। To 40% of the people who didn't even know they had diabetes had soaring sugar levels. To help India beat diabetes, Beto has collaborated with Lions Club International to conduct diabetes screening camps all over India to create awareness and control this silent epidemic. आपने शुगर चेक की क्या? Get your diabetes care program with a free Beto glucometer. Give a missed call on 740-1100. The main accused in the Bargari sacrilege case, Pradeep Singh, has been shot dead by two bike-borne gunmen at Kotakpura in Faridkot. 3 arrests have been made, 2 Jaish-e-Mohammed terrorists and 1 of their helper. Big success for the Jammu police as they have busted this major terror module. This was the tanker that was being used by the Jaish-e-Mohammed terrorists to sneak into the weapons from the Jammu to the Kashmir Valley. Have you checked your sugar levels? Afraid of diabetes and its complications? होप खत्म हो गई थी। मुझे लगता था यार ये क्या लाइफ है। Is diabetes a serious epidemic? 200 million people are at the risk of developing diabetes. So one should always think that what really works for them. Technology is the only way we can solve this problem for India. Beto is a one-stop solution for anything diabetes. Watch India Beats Diabetes with Beto, a World Diabetes Day special, today at 6:30 p.m. only. Welcome. Before we start, let me ask you this very important question. Have you checked your sugar levels? Why I'm asking you this question is because diabetes today has become an alarming health concern for all of us. India alone has 77 million people with diabetes, and the figure is expected to rise to 134 million by 2045. We are second only to China in terms of the number of people with diabetes, but it seems we soon might overtake them. Amongst us, there are 200 million Indians at the risk of diabetes. Are you one of them is the question. So I ask you again, have you checked your sugar levels? Welcome once again. My name is Suesha Sawant and you are watching India Beats Diabetes with Beto in association with Republic Media Network, a World Diabetes Day special. Beto is a digital app-based platform that provides clinically proven comprehensive diabetes care programs to prevent, control and reverse diabetes under the guidance of experts. Today, on the eve of World Diabetes Day, on this panel, we speak with experts and share with you how through technology, Beto is reaching the entirety of India, starting from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, to ensure diabetes care is available at the click of a button through technology. Let me introduce our panel members. We have with us Gautam Chopra. He is the CEO and co-founder of Beto. We also have with us Dr. Navneet Agarwal. Also next is Praval Sharma, who you famously know as Sharma Ji Technical. He is a tech influencer and Beto user. And last but not the least, Sujata Sharma, senior dietitian and nutritionist at Beto. Joining us in the studio is a live audience that will also be sharing its experiences later in the show and asking some questions to our panelists. But before that, we begin with the panel discussion. Dr. Navneet Agarwal, I want to start with you first. Have you checked your sugar levels? This is a very important question, but our viewers need to know why this is relevant, why this is important today, and why must we be aware about our sugar levels and what should our correct levels be? As we know that the number of the people affected with diabetes is increasing very rapidly, and over 200 million people are at the risk of developing diabetes in near future, and they don't know when will they develop diabetes. In fact, most of them, they detect their diabetes or they come to know that about their diabetes when they go for some other problems in the hospital, even the surgeries like cataract surgeries or some other surgeries, and even they get detected during some routine health checkups. And moreover, the patient, those who are already known diabetic, they don't check their sugars regularly,
And that is the main reason that the majority of our patients are uncontrolled, because they are not checking their blood sugars regularly. For detecting the patient, those who are undiagnosed, and for motivating the patient, those who are already known diabetic, to check their blood sugar regularly, I'll request you all, whenever you meet your near and dear ones, always ask them, aapne sugar check ki kya? Absolutely. And on that note, Gautam, I want to come to you next, because Beto is an app, a digital platform, and Beto has won the National Startup Award in 2021 for healthcare. It has taken upon itself to ensure that through technology, you can make diabetes care more accessible and affordable for Indians. How are you doing this? Beto is a one-stop solution for anything diabetes. Dr. Navneet and you asked a very pertinent question, aapne sugar check ki kya? And we start off with that by making, the day-to-day monitoring of blood glucose levels and blood glucose monitoring a lot easier and effective through a very small and simple connected glucometer, which is very affordable and simply plugs into your phone. And, it's not just about monitoring, it's about once you monitor your sugar levels, and in case your readings are high or low, then instantly your data is actually analyzed by medical experts comprising doctors, nutritionists, and coaches. And they're able to reach out to you proactively and help you across different aspects of management. Second, more importantly, of course, affordability of diabetes care becomes an important aspect of ensuring control. And we're able to do that by, providing you medicines and other services, for example, the doctor, consults, etc., at a very affordable price of just about 1,000 rupees per month. And lastly, the problem of awareness by ensuring that anything that you need to know around diabetes is available at a click of the button 24/7, and our medical experts are available to you. So we ensure we impart the right education at the right time to the right individual. So we are able to solve also for the problem of awareness in that case. Absolutely. And, I'd like to bring in Praval Sharma. A lot of you know him as Sharmaji Technical. He's a YouTube influencer and primarily helps us understand and make tech easier for us. So, Praval, explain to our viewers, how easy or difficult is it to use the Beto app, and how did you take to it? A Beto app is very useful and very easy to use. I check my sugar alternative days in just less than 30 seconds. It is that easy with just help of the kit and the smartphone. So this is the main device which you use with your smartphone application. You need to just insert this device into your smartphone, and then it detects that you have inserted it, and now you need to insert the strip. And now you need to take your blood like this. And in less than 10 seconds, you will get your results. Hello. So मैंने आपकी रीडिंग देखी, आज हाई आई है? जी हाँ, आज हाई है थोड़ी सी. क्या लिया था आज? कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा. जी बिल्कुल, thank you. So this is how they call you and educate that you have done something wrong. So you need to balance your next meal so your sugar levels will be little down. So that's certainly very easy to use, and you make it look very easy. But I also want to come to you, Sujata, because it is said when you get the right counseling and regular care from an expert, it makes a huge difference in the sugar levels, and sometimes it is even possible to reverse diabetes sometimes in some cases. So your key advice and basic tips on how they should keep their sugar levels under check. So we have to see that what exactly works for us. Like we have different diets in place, we have exercise routine. So one should always think that what really works for them. That's the most important thing when it comes to managing your own diabetes. Monitoring, as Dr. Navneet rightly pointed, that monitoring is one of the things which actually let us know what exactly the blood sugar readings are. Because until and unless we don't know about what are our sugar levels, we won't be able to work on that. So that's important. Diet is another aspect which needs to be worked upon. So you should know what exactly what kind of a diet you should go for. Don't go for fat diets which is available all through the internet. Always see that what really works for you. That's important. Exercise is the next thing which you needs to work on, right? So at least 35 to 40 minutes a walk or any kind of an exercise in a daily routine is must for diabetic patients. Absolutely. And now that we've understood the basics of it and heard from our experts, let's cut across to the audience members. Some of them are Beto users themselves, and really to understand how they came about to use it, what was the first reaction. Saurav Varun is with us. Saurav, yes, thank you for being in our studio today. If you could share your experience of when did you first learn that you have diabetes, how did you discover it, how did you take to the Beto app, and how often do you monitor your sugar levels? I'm Saurabh, and I'm from Ghaziabad.
And 2 or 3 years back, I came to know that I'm in the trap of sugar level. One day on the Facebook, I came to know the Beto app. तो वो जब हमने उसको देखा तो मैंने कहा ठीक है, मैंने I'll download the Beto app and I'll monitor my sugar level over there. I'll got a first Beto plan. Changes में ये था कि भाई आटा तो हम सभी खाते हैं, अब उस आटे में क्या मिक्स करके खाएं कि ताकि हमें आगे के लिए हमारा सही रहे। तो जब मैंने शुगर लेवल वेल टेस्ट करवाया तो मेरा HbA1c 10.2 था। तो मेरे सर ने कहा कि ये तो ज़्यादा है, तो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जो कि मुझे बीटो ऐप से ही आई। तो रेगुलरली मॉनिटर मेरे को मॉर्निंग में शुगर लेवल चेक करनी होती थी और पोस्ट मील मेरे को डिनर शुगर लेवल चेक करनी होती थी। और अगर उसमें थोड़ा सा भी डाइवेशन रहता था तो अक्षता मुझे, जो मेरी कोच थी, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालती थी कि आपकी शुगर लेवल हाई है, क्या खाया है। उनकी एक खास बात थी कि वो मेरे को बोलती थी कि आप मेरे को अपनी मील की फोटोग्राफ भेजो। और आप नहीं मानेंगे, मतलब 3 से 3.5 महीने में मैंने दोबारा से, मेरी कंपनी ने हेल्थ चेकअप कराया, मैंने फिर से कराया, तो एट दैट टाइम मेरा जो HbA1c था वो 7 आ गया था। So basically it's important to be regular, persistent, and Beto really helps you do that. I believe Chandra Garg is also amongst us, and Chandra, what is your story like? We understand what he felt, but when did you discover you have diabetes and how did Beto help you through it? First of all, I want to thank you all, and I want to thank the whole Beto team. I am diabetic since 2011. पहले तो मैं बहुत, क्या कहते हैं, ऐसे मुझे मेरी होप ख़त्म हो गई थी। मुझे लगता था यार ये क्या लाइफ है कि ये मत खाओ वो मत खाओ इस तरीके से। वन फाइन डे माय जीजा जी टोल्ड मी अबाउट इट, लाइक एक छोटा सा डिवाइस है, तुम यूज़ करके देखो, एंड इट इज़ वेरी पोर्टेबल एंड इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी बेसिकली। मैंने बीटो का प्रोग्राम ज्वाइन किया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, पहले मेरी जो हेल्थ कोच थी वो पूजिता थी, अब सुजाता जी हैं, और हमेशा से डॉक्टर नवनीत ही मेरे डॉक्टर है शुरुआत से। तो इनकी तरफ से मुझे एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। ये होता है कि कई चीज़ें आप बीइंग अ हाउस वाइफ, आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई हेड। तो ये होता था कि मैं अपने लिए चीज़ें नहीं कर पाती थी, और मुझे ना चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि बीइंग अ डायबिटिक व्हाट एम आई सपोज टू ईट, एंड व्हाट आई एम सपोज टू स्किप, और हाउ टू मैनेज माई